later on. So today we will start discussing about essentials of machine learning, and we will start by discussing linearity and non-linearity. And concept of being a linear or non-linear thing is applicable to both data and the model. So there are two basic concepts here which we can see. Okay, I will try to include you two as well. So basically there are two different things here. One is data, other is model. So data is, you know that data is raw facts and figures, and we process the data to get some information. And the model is normally that is built on the basis of data. So linear या non-linear के जो concept हैं वो ये हैं कि ये दोनों applicable होते हैं data पे भी और model पे भी. Machine learning is most of the times it is actually related to building models on some data. So anyways, so a lot of students are messaging me. Anyways, so we were discussing about data and model. Data कोई भी raw facts and figures होते हैं और model उस data की base पे बनाया जाता है. Model is just like कि उस कोई भी जो data आपके पास मौजूद है उसका एक generalized view, उसमें कोई जो एक particular pattern जो उस पूरे data को represent करता है, that is called as model. So जो linear या non-linear होने का जो concept है वो data पे किसी और तरह से applicable है और model पे किसी और तरह से applicable होता है. So data context में it is called as a linear if the relationship between the input and output is linear. So अगर input और output क्योंकि data में दो ही main चीज़ें होती हैं, basically तीन होती हैं, input, processing, output, but वो जब हम machine learning की बात करते थे we are only focusing on input and output from data point of view. So if the input and output are they have a linear relationship. अब linear relationship क्या होता है कि एक अगर increase कर रहा है तो दूसरा भी increase करे, input increase हो रही है तो output भी increase हो, तो that is linear relationship. ठीक है, या x की value increase हो रही है तो y की value भी correspondingly उतनी ही मिकदार में, उतनी ही quantity में जो increase हो, that is a linear relationship. So data in that case, in that scenario is called as a linear. और इस तरह non-linear का मतलब यही है कि उनका relationship linear नहीं है, मतलब that can be inverse as well. ठीक है, आपने देखा होगा directly proportional और inversely proportional का concept इसी base पे normally data के जो हम discuss करते हैं उसमें discuss किया जाता है. So this is the simplest way to represent or to say that the data is linear. That when the value of the input increases, the value of output also increases. So and reverse is also true for both of the scenarios. So relationships, linear models, models के case में जो है linear relationship, it is slightly more you can say different, और इसमें थोड़ी सी definition involved हो जाती है. ठीक है, all the models that are use linear equations to model the relationship between input and output are called linear models. So data के केस में हमने कहा था कि input और output उनका अगर आपस में linear relationship है तो that is called as linear, that data is linear. But in a model's case, if the you can say linear equations, if we use linear equations to build the model between input and output, then it is called as a linear model. So इसमें linear equation का involve होना ज़रूरी है. Sometimes it may happen that the equation is exponential or some other mathematical
form. So we have to make it linear first, and then it can be you can say treated as a linear model. So sometimes by preconditioning the input or output, a non-linear relationship between the data can be converted into linear relationship, and then the linear model can be applied on it. So that's again the same thing कि हम डाटा को लीनियर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी भी मॉडल को लीनियर हम कर सकते हैं बाय अगर उसकी रिलेशनशिप या इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं भी है तो भी उसको लीनियर बना के उसको हम लीनियर फॉर्म मॉडल उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर मॉडलिंग कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इनपुट आउटपुट आर रिलेटेड विद एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप. अब ये वाला y is equal to f e exponent x. Now this is a exponential relationship. ठीक है, इसमें y की अगर जो है अमाउंट या उसमें इंक्रीज कुछ इंक्रीज होता है तो जो इक्वेशन के दूसरे साइड पे है उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, इंक्रीज या डिक्रीज है. सो ये डाटा जो है, ये इक्वेशन जो है, ये क्लियरली नॉन लीनियर है. ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे डाटा मॉडल बनाने की बजाय हम ये कर सकते हैं कि वी कैन बिल्ड अ मॉडल आफ्टर अप्लाइंग अ लॉग ऑपरेशन. हम इसका इस पे लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर इसको जो है ना, इस पे हम अपना मॉडल बिल्ड करेंगे. होगा क्या कि लॉग ऑपरेशन जब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो दिस ऑपरेशन कैन ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल non-linear relationship into linear one. जैसे कि इधर log लेके दिखाया गया, log y is equal to fx हो जाएगा, तो उसमें exponential relationship है वो खत्म हो गया log लेने की वजह से, और now it becomes linear relationship. ठीक है, then we build the linear model to predict log y instead of y. तो हम जब ये non-linear relationship से linear में जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उससे होगा क्या कि हम फिर y की बजाय हम एक लीनियर मॉडल बिल्ड कर रहे होंगे जो कि log y पे जो है वो बेस करता होगा इंस्टेड ऑफ y. तो विच कैन देन बी कन्वर्टेड टू y बाय टेकिंग एक्सपोनेंट, जिसको आप मॉडल बिल्ड करने के बाद अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद दोबारा आप इसको एक्सपोनेंट देकर इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो एक्सपोनेंट रिलेशनशिप में. देयर कैन आल्सो बी a cases where a problem can be broken down into multiple parts and linear models can be applied to each part, ultimately solving a non-linear problem. तो ऐसे भी केस हो सकते हैं कि जहाँ पे एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में या पार्ट्स में डिवाइड करके उन हर किसी को का लीनियर मॉडल बनाया जाए और फिर एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम को लीनियर वे में आप यानी कि सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं, उनको पहले देख लेते हैं. तो पहले फिगर 2.1 का जिक्र किया गया है, तो ये डाटा की यहाँ पे एग्जांपल है. लेट मी जस्ट जूम आउट. So this is linear scaling. You can see both the clauses are equally divided and they are divided on the plane. और ये नीचे इनकी मॉडलिंग हो रही है लीनियर रिग्रेशन के थ्रू. ठीक है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप की एग्जांपल है. इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल केस की एग्जांपल है जिसमें y is equal to exponent x. तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप पे एक कर्व है, लेकिन आप देखें इसका लॉग लेने के बाद इट बिकम्स लीनियर. सो बोथ प्लेन्स x एंड y दे बिकम्स इन अ लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई, इसमें भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है दोनों में. तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक एग्जांपल से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. इस तरह ये आप इसको पार्टीशन करके यू हैव डिफरेंट क्लासेस ओवर हेयर एंड यू कैन व्हाट यू कैन डू एज इसको हर किसी को अलग से डिवाइड करके आप इसको हर लीनियर रिलेशनशिप, इसमें इसने पार्टीशंस को जोड़ा हुआ है. यहाँ पे 3 लाइंस हैं लीनियर. आप देखें अगर यहाँ पे इन फिगर 2.3 बॉटम वाली, इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे दिस लाइन स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, then straight up and then here. So these are 3
different lines that you get from after you divided the above data and try to make it linear and solve it linear equations by using linear models. So there's another example. ठीक है, ये नॉन लीनियर जो है वो सेपरेट डाटा था. आप देखें डाटा कितना डिस्पर्स है, लेकिन आफ्टर मेकिंग इट लीनियर नॉन लीनियर रिग्रेशन इसको इसमें आपको बस स्ट्रेट लाइन नहीं आती, इसमें आपको कर्व लाइन आ रही है. सो इसको लीनियर नहीं बनाया गया, इसको वैसे ही सॉल्व किया गया. तो ये जब आप इसको इस डाटा को मॉडल करेंगे तो इसके दरमियान रिलेशनशिप कुछ ऐसे आएगा. ठीक है. अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस के डाटा ये आपके पास एक डाटा है. नाउ दिस एक्चुअली टॉप फिगर 2.4 दिस इज दैट डाटा, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ डाटा. ठीक है, ये दो क्लासेस हैं डिफरेंट, ए और बी हो सकती हैं, डिजीज और नॉर्मल फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ. तो दीज आर टू डिफरेंट क्लासेस हियर. अब ये इसकी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है. नाउ दिस डाटा एक्चुअली वी हैव टू द पर्पस ऑफ मॉडलिंग इज टू extract a relationship or build a generalized relationship which can represent both the classes. ठीक है, और वो हमने यहाँ पे किया और ये इसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है. नीचे जो 2.4 में बॉटम जो फिगर है वो उसके बेसिकली जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है आफ्टर अप्लाइंग द मॉडलिंग प्रोसेस. तो मशीन लर्निंग इज एक्चुअली अ मॉडलिंग प्रोसेस जो कि डाटा से लर्न करके एक आपको जनरलाइज फॉर्म में एक मॉडल देती कि ओके दिस इज द रिलेशनशिप दैट द डाटा दैट बोथ क्लासेस ऑफ डाटा हैज, और दिस इज द मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स इट. ठीक है, ये तमाम फिगर्स को एक्सप्लेन हो गई. सो व्हाइल इन सम केसेस द रिलेशनशिप इज प्योरली नॉन लीनियर एंड नीड्स अ प्रॉपर नॉन लीनियर मॉडल टू मैप इट, जिससे 2.4 में शो किया गया है. ये वाली लीनियर मॉडल्स जो हैं दे आर सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड, बिल्ड एंड इंटरप्रेट. लेट मी जूम इन. सो द लीनियर मॉडल्स जो हैं वो उनको अंडरस्टैंड करना, बिल्ड करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको इंटरप्रेट करना, क्योंकि बिल्डिंग अ मॉडल इज नॉट इज वन स्टेप, बट इंटरप्रेटिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मॉडल इज अनदर important thing, because if you are unable to interpret a model, you cannot you can apply it to some other practical examples. So हमारा brain जो होता है it is very trained and tuned for linear models normally, क्योंकि हमारे जो life experiences हैं वो normally linear trends को follow करते होते हैं. ठीक है, most times हम इसे अपना natural या intuitive behavior कहते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसको आप लीनियर बिहेवियर कह सकते हैं. ऑल द मॉडल्स इन द थ्योरी ऑफ मशीन लर्निंग कैन हैंडल लीनियर डाटा. ठीक है, तमाम जो मॉडल्स हैं, जितने भी मशीन लर्निंग में मॉडल बनाने के जो एल्गोरिथम्स हैं, मेथड्स हैं, वो लीनियर मॉडल्स को, लीनियर डाटा को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, इसमें एग्जांपल्स ऑफ प्योरली लीनियर मॉडल्स आर लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स and without non-linear kernels etc. तो ये तमाम जो मॉडल्स हैं कुछ जो कि एग्जांपल्स हैं. कुछ नॉन लीनियर मॉडल्स भी जो हैं वो मौजूद हैं मशीन लर्निंग में, और उनमें क्या होता है कि उनके दे यूज सम नॉन लीनियर फंक्शन टू अप्रोक्सीमेट द नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, क्योंकि डाटा के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो नॉन लीनियर हैं. इसलिए ये मशीन लर्निंग के मॉडल जो नॉन लीनियर मॉडलिंग करते हैं वो उनमें जो फंक्शंस यूज होते हैं वो भी नॉन लीनियर होते हैं. ना फंक्शन हेयर इन मशीन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मशीन लर्निंग एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस और मॉडल्स जो कि डाटा में से पैटर्न माइन करके बिल्ड करते हैं और आपको देते हैं एक जनरलाइज मॉडल. एग्जांपल्स हैं नॉन लीनियर मॉडल्स की, न्यूरल नेटवर्क्स, डिसीजन ट्रीज, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स बेस्ड ऑन नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये सब इसकी एग्जांपल हैं नॉन लीनियर कैरेक्टर मॉडलिंग की, ये नॉन मॉडलिंग एल्गोरिथम्स की.
In analyzing data for building the artificially intelligent system, determining the type of model to use is a critical starting step, and knowledge of linearity of the relationship is a crucial component of this analysis. ठीक है, ये डिटरमाइन करना कि कौन सा मॉडल यूज होगा या करना है आपने डाटा एनालिसिस के लिए, और ख़ास तौर पे एआई बेस्ड जब सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि मॉडलिंग की टेक्निक से जो है ना एआई बेस्ड भी हो सकती है, नॉन एआई बेस्ड भी होती है, लेकिन हम मशीन लर्निंग इज नॉर्मली एआई बेस्ड टेक्निक्स, but there are also non AI based techniques that can be used to model the data, or they are not included in machine learning obviously. So इसका essentially knowledge होना आपको जो है ना कि किस किस्म का रिलेशनशिप है, डाटा क्या है, और उसको उस पर कौन सा मॉडल सूटेबल रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इस सारे सिनेरियो में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मशीन लर्निंग या एक्सपर्ट सिस्टम्स में जो है ना दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, स्टिल दे आर द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द research that is being done in the area of machine learning. So सबसे पहला है एक में occam's razor. In developing and applying machine learning models, one always comes across multiple possible solutions and multiple possible approaches to get the answer. ठीक है, आप जब कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करते हैं या डिप्लॉय करते हैं या डेवलप करते हैं या किसी प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं और एक से ज़्यादा अप्रोचेस भी अवेलेबल होती हैं. तो इसमें से कौन से अप्रोच आपके लिए सबसे सूटेबल है, ठीक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर थ्योरेटिकल गाइडलाइन मौजूद नहीं है आज तक. ठीक है, नॉर्मली इट्स जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल अप्रोचेस. ठीक है, बट थ्योरेटिकली देयर आर नो गाइडलाइंस अवेलेबल as to which solution is more suitable or better than the you can say rest of the approaches. But largely it depends on the data itself and the type of data set you have, whether it has linear distribution, non-linear distribution, and types of classes it has, types of attributes it has. So in such cases, the concept of Occam's razor, which is also sometimes called as principle of parsimony, can be effectively applied. ठीक है, अगर जब ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस, एक से ज़्यादा मेथड्स या एक से ज़्यादा आंसर्स मौजूद हैं सेम डाटा के लिए, तो Occam's razor या प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी को अप्लाई किया जाता है. प्रिंसिपल कैसे क्या स्टेट करता है, इसकी डेफिनेशन है कि one should not make more assumptions than the minimum needed, or in other words, when there are multiple alternatives for a solution, the simplest approach is the best. तो ये बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास जब एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस मौजूद हों या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मौजूद हों और आपको लग रहा हो कि सभी सॉल्यूशंस जो हैं वो वैलिड सॉल्यूशंस हैं, अच्छे सॉल्यूशंस हैं, तो आपको सबसे सिंपल अप्रोच जो है वो अपनानी चाहिए उस मसले को हल करने के लिए. सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी, कि आपको मिनिमम जो नीडेड है उससे ज़्यादा काम उससे ज़्यादा नहीं अप्लाई करना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, स्पेशली उन केस में जब आपको एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल हों. तो ऑलवेज गो फॉर द सिंपल अप्रोच. सबसे सिंपल अप्रोच सबसे बेहतरीन होती है. तो ये बेसिकली ये प्रिंसिपल है, ये कोई थ्योरम नहीं है, और इट कैन और ये अप्लाई नहीं किया जा सकता क्वांटिटेटिव रूल और इक्वेशन के तौर पे, लेकिन इट स्टैंड्स अ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव कंसेप्चुअल गाइडलाइन व्हेन मेकिंग सच डिसीजंस इन रियल लाइफ. तो ये लेकिन आपके लिए एक तरह से गाइडलाइन के तौर पे ज़रूर एक्ट कर सकता है जब आपने रियल लाइफ में भी डिसीजन करने हो कि when you have multiple solutions, multiple options, alternatives available, then you must always go for simplest approach first. It is important to note that this rule creates a form of trade-off, where on one side we have more information in the form of more complexity, and on the other hand, less information in the form of simplicity.
One should not oversimplify the problem such that some of the core information is lost. So another derived aspect of Occam's razor is the simpler solution tend to have more generalization capability. So this is a very important trade-off between the two. जब आप सबसे सिंपल सॉल्यूशन या सिंपलेस्ट अप्रोच की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लूज कर सकते हैं जो कि शायद कम्प्लेक्स अप्रोचेस जो हैं वो कवर कर लेती हैं। आपके पास एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ से मतलब है कि आपको कोई कंप्रोमाइज करना पड़ता है बिटवीन कम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, आप जब सिंपलेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो यू गेट सिंप्लिसिटी बट यू लूज कम्प्लेक्सिटी। जब कम्प्लेक्सिटी लूज हो गई तो इसका मतलब है आपकी जो बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यूजफुल हो सकती है वो आपने लूज कर दी। लेकिन जब आप कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे तो यू विल लूज सिंप्लिसिटी। दैट मीन्स के यू विल हैव मच मोर इंफॉर्मेशन इन योर मॉडल, इन योर फाइनल इक्वेशन और पैटर्न, but the solution will not be simple or it will be hard to interpret it, or it will be hard to, you can say, apply it to the general problems in that particular area. So the simplicity और complexity दोनों कभी achieve एक ही वक्त में नहीं की जा सकती, so you have to trade off between one another. So आप ये कह सकते हैं कि सिंपलर सॉल्यूशन जो होते हैं ये इस प्रिंसिपल ऑफ पार्समनी के मुताबिक, ठीक है, दे हैव क्योंकि वो सिंपल हैं और वो जनरल वाइड एरिया को कवर कर रहे होते हैं तो उसमें जनरलाइजेशन कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। तो मतलब ये कि दे माइट हैव गुड प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज। तो ये था Occam's razor. Second important concept in machine learning, your essential concept, is a no free lunch theorem. This is just related to Occam's razor as well. So इससे अवेयर होना भी ज़रूरी है। ये वॉलपर्ट एंड मैक्रेडी ने इसको अपने एक पेपर में रिप्रेजेंट किया। इसको NFL theorem या no free lunch theorem कहते हैं इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। और theorem क्या कहता है? If an algorithm performs better on certain class of problems, then it pays for it in the form of degraded performance in other classes of problems. In other words, you cannot have a single optimal solution for all classes of problems. So इसको जो सिंप्लीफाई करने के अगर बयान किया जाए तो वही ऐसे कि अगर आप फ्लावर्स, दो किस्म के फ्लावर्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, और कोई एल्गोरिथम उसको क्लासीफाई करने के लिए जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एल्गोरिथम जो है वो डिजीज़ और पेशेंट्स के डाटा पे भी उसी तरह अच्छा परफॉर्म करे। सो इट कैन हैपन और नॉर्मली इट हैपन्स कि कोई एल्गोरिथम अगर एक टाइप के प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरे प्रॉब्लम्स पे जो है वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है। सो इन अदर वर्ड्स या आप ये भी कह सकते हैं या इन कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि एक ही सॉल्यूशन जो है तमाम प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी नहीं होता, ठीक है। आपको एक ही सॉल्यूशन तमाम प्रॉब्लम्स पे एप्लीकेबल या ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि द पर्पस ऑफ द मॉडलिंग process is to find an optimal solution most of the times. So this theorem needs to be taken more of a guideline than a law. ये भी एक guideline के तौर पे आप इसको ले सकते हैं क्योंकि ये law नहीं है, as it is quite possible to have one well designed algorithm outperform some other not so well designed, ठीक है, algorithm in all possible classes of problems. However, in practical situation we can infer that from this theorem that we cannot have one solution for all problems and expect it to work well in all situations. So practically जो है ये theorem के मुताबिक हम जो एक solution जो तमाम problems पे नहीं apply कर सकते या एक optimal solution तमाम problems के लिए possible नहीं है।
So next is law of diminishing returns. So basically this law has come from school of thought of economics and business scenarios. इकोनॉमिक्स और बिजनेस सिनेरियोज में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसका पर्पस क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. It states that adding more headcounts to complete a job starts to yield less and less returns with the increase in existing number of headcount. So आप जैसे ही कोई एफर्ट कोई एडिशनल एल्गोरिथम एक पर्टिकुलर जॉब में को या एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए करते हैं, डालते हैं या ऐड करते हैं, तो देयर विल बी अ टाइम के वो आप जितनी एडिशनल जो है वो एफर्ट इन दैट सेंस ऑफ मशीन्स हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम्स हो सकती है, और भी कोई चीज़ हो सकती है, तो देयर इज अ लिमिट टू दैट कि वो उसको जो है ना उसकी यील्ड या रिटर्न जो है ना वो इंक्रीज हो, क्योंकि आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इंक्रीज देयर विल बी अ डिक्रीज in the, you can say, overall performance of the system or job. और मशीन लर्निंग के परस्पेक्टिव से आप कह सकते हैं बी अप्लाइड with respect to feature engineering. So this is very important here, क्योंकि feature selection, feature engineering is one of the widely explored area of research in machine learning. From the given set of data, one can only extract a certain number of features, after which the gains in performance start to diminish and the efforts are not worth the effect. In some ways, it aligns with the occam's results and adds more details. तो आप जब फीचर, मसलन आपके पास कोई पिक्चर है, आपने उसमें से फीचर सेलेक्ट करने हैं या एक्सट्रैक्ट करने हैं या फीचर ने कंस्ट्रक्ट करने हैं, इन हर केस से जब भी आप कोई फीचर्स के साथ कुछ वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप एक फिक्स नंबर ऑफ फीचर्स पे मॉडल बिल्ड कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल. तो अगर समटाइम मोस्टली ऐसा होता है कि आप जितने फीचर्स या डिटेल्स आप ऐड करते जाएंगे, मॉडल उतना ही जनरलाइज है और कम्प्रीहेंसिव होता जाएगा, स्पेशलाइज होता जाएगा, और वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा. लेकिन आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ फीचर्स जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है बुरी होना शुरू हो जाएगी, और उसके जो इफेक्ट जो है वो जो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. इसको सिंपल आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है कि आप एक पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और यू आर वेरी हंग्री, और आपने वो पिज़्ज़ा खुद खाना है. अब उसके फॉर एग्जांपल देयर आर 8 स्लाइसेस और 6 स्लाइसेस, तो आपको सबसे ज़्यादा आप जब पहला स्लाइस लेते हैं, यू एंजॉय इट अ लॉट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ईच स्लाइस यू एंजॉय मोर एंड मोर. हो सकता है तीसरे चौथे स्लाइस तक आप का पेट फुल हो जाए और आपके वो मज़ा या वो जो आपके टेस्ट पर्स हैं वो आपको मैक्सिमम जो है प्लेयर दें. लेकिन आफ्टर दैट each slice you will take, although you will eat it, but आपके जो वो प्लेयर है, वो खाने का एस्थेटिक सेंस है, वो मान पड़ना शुरू हो जाएगी. until last piece आप उसको खाना भी नहीं चाहेंगे. तो it may be because you are too full or whatever. So actually this is law of diminishing returns. This is an excellent example of law of diminishing returns. So early trends machine learning में क्या थे? early trends ये थे कि एक्सपर्ट सिस्टम्स को नॉर्मली बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया, बिल्ड किया गया, और एक्सपर्ट सिस्टम्स जो हैं उनको एलन ट्यूरिंग ने बेसिकली मशीन लर्निंग जो है उसको रिकग्नाइज किया, और उसको फील्ड ऑफ एआई को स्टार्ट करने में एलन ट्यूरिंग का बड़ा जो है वो हाथ है, कंट्रीब्यूशन है. तो अर्ली 1980s में मशीन इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जो है सिर्फ एक्सपर्ट सिस्टम या नॉलेज बेस्ड सिस्टम तक लिमिटेड थी, और उस तक के लीडिंग एक्सपर्ट एक एक्सपर्ट सिस्टम में डॉक्टर एडवर्ड जो थे, उन्होंने एक्सपर्ट सिस्टम को कैसे डिफाइन किया कि एन इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूजेस नॉलेज एंड इन्फ्रेंस प्रोसीजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर डिफिकल्ट इनफ टू रिक्वायर सिग्निफिकेंट ह्यूमन एक्सपर्टीज फॉर सोल्यूशन. ऐसे प्रॉब्लम जिनमें जो ह्यूमन एक्सपर्टीज जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए हों,
और उनको सॉल्व करना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, तो ऐसे इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो कि नॉलेज और इन्फ्रेंस की बेस पे जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम्स कहलाते हैं। तो such systems were capable of replacing experts in certain areas. इसमें मेडिकल एरियाज भी शामिल हैं. These machine were programmed to perform complex heuristic tasks based on elaborate logical operations. In spite of being able to replace the humans who are expert in the specific areas, these systems were not intelligent in the true sense if we compare them with the human intelligence. वो computational में बहुत अच्छे होंगे क्योंकि they can model, they can process the huge amount of data, but intelligent जब हम बात करते हैं कि things learn करना और real time जो है वो act करना, that is part of intelligence as well. So intelligent system हमको two sense में नहीं कह सकते, लेकिन still they are pretty intelligent because they are performing their function on the basis of past knowledge and inference, statistical inference. The reason behind the system were hard coded to solve only a specific type of problem. If there is need to solve a simpler but completely different problem, the system would quickly become completely useless. मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस हम किसी एक चीज से कोई चीज अखज़ करके एक एक्सपीरियंस से लर्न करके हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सिस्टम में कोई इंटेलिजेंट कम्प्लीटली इसलिए नहीं कहा जाता कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और जैसे ही आप इसको किसी और टाइप की प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएं तो ये कम्प्लीटली यूजलेस हो जाता है. Nonetheless, these systems were quite popular and successful, specifically in areas where repeated but high quality, highly accurate performance was needed. For example, diagnosis है, inspection है, monitoring है, control है. तो इन एरियाज में इन सिस्टम को रिपीटेडली और बड़े पॉपुलरली आज भी यूज़ किया जाता है. पर्टिकुलर मेडिकल लाइन में अगर देखा जाए कैंसर डिटेक्शन है और बहुत सारी चीज एरियाज हैं, और मॉनिटरिंग है, कंट्रोल है, फिर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अब इंटेलिजेंट ड्रोन और ये सब कुछ आ गए हैं पर्टिकुलर मिलिट्री वाली साइड पे देखा जाए तो. सो दीज आर और AI बेस्ड सिस्टम्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स. बट आप इसको किसी अगर सिंपलर प्रॉब्लम किसी इनके डेजिग्नेटेड जो एप्लीकेशन एरिया उससे हट के किसी सिंपल प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएं तो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी फंक्शन. फॉर एग्जांपल एक एक्सपर्ट सिस्टम जो कि कैंसर डिटेक्शन करता है, तो उसको अगर आप सिर्फ फ्लावर कलर या फ्लावर टाइप डिटेक्शन पे लगा दें तो इट विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू. बट ह्यूमंस कैन ऑलवेज use the intelligent experience from other sources to the problem different in nature. So आज यहाँ तक रखते हैं मेरे ख्याल में. यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो you are welcome to ask.